been comparing it. I'm Okay. obviously. You think I haven't watched Vampire Diaries, or I haven't? I've done a show called Fana, Right. which was also something very similar. I think Vampire Diaries मैंने 2 बार देखा. हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो यार आप? आई होप आप मौज में होंगे, मस्ती में होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो गाइस आज मैं लेके आ गया एक नई वीडियो के साथ। हम आ गए हैं और ये वीडियो होने वाली है करण भाई की। अब ये मुझे एक चीज़ मुझे आप लोगों ना क्या कहते हैं कमेंट में लाजमी वो बताना कि इश्क में घायल जो है ये कोई फिल्म आ रही है या क्या चीज़ आ रही है जिसमें क्या नाम है करण भाई भी हैं। तो आप करण कुंद्रस भाई भी हैं तो हमें तो जाहिर सी बात है ये चीज़ देखनी है। तो मुझे आप लाजमी बताइएगा यार, क्योंकि मैं थोड़ा बीमार था तो मैं लैपटॉप वगैरह छोड़ के बेड पे ही था, जिसकी वजह से मैंने ना वीडियो वो बनाई है ना ही देखी है वीडियो। काफ़ी बुरी हालत थी मेरी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गया और आज से मैं फिर अपनी नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। और ये वीडियो भी जो इंटरव्यू है ये 5 दिन पहले का है, बट हम देखेंगे कि आप लोगों के साथ बैठ के हम सब देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो पहले भी देखी है तो कहीं जाना मत यार, वीडियो देख के ही जाना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद इंशाल्लाह बात करते हैं। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह दरख्वास्त है कि यार दाएं तरफ या बाएं तरफ कहीं भी आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा तो कर लो यार, थोड़ा सपोर्ट आप दे दो यार, फ्री का होता है। और वीडियो को लाजमी लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो 1 2 3। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. I've been comparing it. Okay. Obviously, you think I haven't watched Vampire Diaries, or I haven't? I've done a show called Fana, Right. which was also something very similar. I think Vampire Diaries मैंने 2 बार देखा. Okay. Right. तो कभी कभी टेक करते करते मुझे ऐसे रियलाइज होता है रुक मैं डेमन नहीं रुक बिकॉज ऑफ दैट द अमाउंट ऑफ हाइप दैट गॉट क्रिएटेड, जो रीच हमने सोची थी उससे 10 गुना ज़्यादा रीच है. आई हैव ऑलवेज प्लेड कॉकी कैरेक्टर्स. यू टेक आउट कैलकाटा, आई वाज कॉकी. You take out Delete, I was cocky. Karan Kundra, who will be seen essaying the character of Veer in Colors TV's upcoming supernatural drama Ishq mein Ghayal, got in an exclusive conversation with us, and here's what he has to say on the show, his character Veer, and a lot more. टॉकिंग अबाउट द शो, जब से शो के प्रोमोज बाहर आए हैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग हो गया है शो की कहानी को लेकर और शो में किरदारों को लेकर, आपके और कश्मीर के किरदारों को स्पेशली. तो क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? व्हाट एग्जैक्टली आर यू प्लेइंग इन द शो, इफ यू कैन डिस्क्राइब? The reason why I chose to be a part of the show, apart from being the scale and the biggest thing on television, is Veer. Okay. Period. I think he's one of my most interesting characters. He's one of my most difficult characters. It's it's very easy to portray the good guy, which I've done all my life. It's very easy to portray a bad guy because they're script backed. Right. ये good guy है और ये ऐसे करता है, और ये bad boy guy है ये तो ऐसे करता है. It's very difficult to even write and portray a guy who's Veer. I can't describe Veer I can't put him in a category. And if you can't put him in a category, it becomes extremely difficult to portray him because I've never done this before. Okay. Right. So he's very instinctive. He's very opinionated. He doesn't think about what people have to think. He's driven by love. He's passionate. He can kill, and it's right for him. That's what I love about him. So yeah. Okay, talking about the show again, a lot of people must have asked you. There have been a lot of comparisons ever since the promos have been out. Yeah. Comparisons, if I say comparisons with the Vampire Diaries, of course, comparisons with Pyar Ki Kahani too. How have you been receiving these comparisons, and what is your take on all these comparisons? I've been comparing it. Okay. Obviously, you think I haven't watched Vampire Diaries, or I haven't? I've done a show called Fana, Right. which was also something very similar. Right. I think Vampire Diaries मैंने 2 बार देखा. Okay. Right. तो कभी कभी टेक
करते करते मुझे ऐसे रियलाइज होता है रुक 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 मैं डेमन नहीं हूँ, रुक रुक रुक, you know what I mean? So it's human nature. It's very simple. You see two boys who are brothers, who are bhediya. There's one girl who's human. It is, you directly go, because Vampire Diaries is such an iconic show. Right. I've seen it twice. तो मैं खुद चले जाता हूँ कभी कभी वहाँ पे, and you know, so it's but natural. अगर मुझे हो रहा है तो सबको ही हो रहा है. Right. But because of that, the amount of hype that got created was something that we didn't expect. Right. जो रीच हमने सोची थी उससे 10 गुना ज़्यादा रीच है. It is but obvious that, you know, sometimes I'm watching a film, I'm like, ये तो वो है, because that's the kind of cinema that you've loved, right? Those are the stories. It's pretty obvious that if we are making Vampire Diaries, then you might as well go and watch Vampire Diaries, right? Right. Why would you want to sit every day and watch Ishq mein Ghayal? So yeah, I feel what they're feeling. Okay, so is it safe to say then that your character is somewhere inspired by Damon? There is a semblance with the cockiness. Okay. But I've always played cocky characters. You take out Calcutta, I was cocky. You take out Dilito, I was cocky. But there's the amount of layers that Veer has is very different. There is no backing Okay. for Veer. There's no redemption कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी माँ के साथ ये हुआ था बचपन में. Nothing. Right. There's no cushioning for Veer. That makes it all the more tough. Okay. There is no cushioning presently because there's nobody supporting Veer. You get it? So it's very, I mean, more complicated. A lot more layered, a lot more complicated. Right. Okay. What was your reaction when the show was offered to you, and why did you decide to, you know, go for it? This was August end last week, and I got called by Yash ji, and he said, "एक बार सुन ले आके." And then Mamta Patnaik ma'am and Yash ji at Beyond Dreams, I heard the narration. It was very early stages that there's a concept, Bhediya, and this is what we want you to do, because the first thing that came into our mind was this. But it was TV, and TV takes a lot of commitment. And with the kind of life that I have, at that time I was I think finishing off Dance Diwane, and I was shooting for my film. So I was like, TV का ये पंगा एक साथ फंस जाते हैं, we have to telecast, like it's not like, तो वो सारे apprehensions. But when they started developing the concept, the story and everything, and then I kept getting drawn towards Veer. So story, scale, everything, as I said, apart from that, it was Veer that I was very intrigued. I was like, how does one play a character? It's a paradox, because you're trying to play a real character in a fantasy world. So Right. The difficulty of that, the challenge of that was very attractive. Okay. Lastly, what is that one thing you'd like to say to all the fans? Thank you so much. India Forums pe bhi, to all the people who are supporting us. The first time that our trailer, a little teaser bit came out, and it went everywhere in one night, and that just gives us a lot of hope. And this is the hope that we are still driving by. And now it's finally going to be airing on the 13th of February at 9 p.m. on Colors and Woot. So please watch it and give us a lot of love. Thank you so much, Karan. All the best. Thank you. Oh my God. यार मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी ये वीडियो, और इंटरव्यू था ये भी करण भाई का, जिसमें उन्होंने बताया इश्क में गायल सिमिलरिटीज विद दी वैम्पायर डायरीज. ये वैम्पायर डायरीज क्या है यार गाइस? अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे कमेंट में बताओ ना यार, मैं देखूं ये क्या है. मुझे नहीं पता ये क्या है, और मैंने एक हफ्ते की क्या गैप ले ली यार. करण भाई का पता नहीं शो आ रहा है क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता. मैं ये वीडियो बंद करने के बाद लाजमी चेक करूँगा, लेकिन आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे काइंडली लाजमी आप कमेंट में बताइएगा इस बारे में. और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार,
क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बड़े मज़े मज़े के नए नए कंटेंट लेके आता हूँ, स्पेशल इंडिया पाकिस्तान के नहीं बल्कि फॉरेन जो होते कंट्रीज जैसे कोई सॉन्ग हो गया उनका जो बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा हो, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग हो गया जो आप लोग मतलब उसके छोटे छोटे जो होते क्लिप्स वो आप देखते हो, लेकिन सॉन्ग वो आप पूरा नहीं सुन पाते, तो मैं वो सॉन्ग भी आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। 3-4 सॉन्ग मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ, आप जाके वो देख सकते हैं। और इंडिया पाकिस्तान की काफ़ी मैं बनाता हूँ, लेकिन स्पेशली जो करण भाई और तेजस्वी मैम की हैं उनके ऊपर मैं ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि मेरे देखने वाले ज़्यादातर वही हैं और आप लोग ही मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे यानी अपने चिकू रिएक्शन ब्लॉग को आप इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।